Well, we take you across straight to the Gaza border, very close to it. Pradeep Dutta is firing under fire there. करते हुए टाइम्स नेटवर्क की टीम आपको नजर आएगी। अब देखिए आसमान पे, अब देखिए किस तरीके से आपको नजर आएगा कि देखिए कहां से किस तरीके से रॉकेट अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लगता है कि सब शांत हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक रॉकेट दागने की आवाज आती है, जिससे वजह से परेशान हो जाती है, ये परेशानी पड़ जाती है। यहाँ पे लोग भागते हुए नजर आते हैं। ये देखिए वो इलाका है, ये सेरट का इलाका है, बिल्कुल गाजा के करीब इलाका है। जब पिछले शनिवार हमास के आतंकवादी थे पैराग्लाइडर के द्वारा इन्फिल्ट्रेट करके वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने पहले रॉकेट दागे थे, रॉकेट के कवर फायर के बाद वो ये आए थे। और देखिए ये पुलिस स्टेशन था जिस पुलिस स्टेशन पे दे हैड फर्स्ट अटैक्ड, एंड दिस वाज द पुलिस स्टेशन दैट वाज टारगेटेड बाय दिस हमास टेररिस्ट। लुक एट द कंडीशन ऑफ दिस पुलिस स्टेशन. Many of those police personnel who were there on duty, they lost their lives, and since then, now you can see right now here the Israeli authorities, they are trying to collect the rubble. They are trying to clear this rubble with the help of the JCB. And they are on high alert. They are on high alert. Reason being that they are trying to ensure that Hamas terrorists who are trying to raise their head should be culled. They should not be allowed to raise their ugly head. It was on last Saturday when all of a sudden we saw that there was an unprovoked aggression from their side. First they fired about 5,000 rockets. Under the cover of that rocket fire, they infiltrated into this side. They used subterranean route. They used tunnels. They also breached fence. They came out to this side, and they also used the motorized paragliders. They came out to this place. They targeted police station. From here they went to nearby locality. They started targeting innocent unarmed civilians, and they also took many of the people hostage. And you can see that how Israeli security personnel, they are on high alert. They are trying to ensure that these Hamas terrorists are eliminated at earliest. So already we have seen that Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel, has made it clear that they have started the war. We are going to win this war, and we are going to end this war. Nobody will be spared, because they are no less than the ISIS terrorists. That's what actually he told in a telephonic conversation which he had with the American President Joe Biden. Times now is the only team to reach here on the spot where from actually we are reporting. This is the area which has faced the brunt of Hamas terror attack on the very first day when they sneaked into this side. And let me show you, short while back, about 10 to 12 rockets. Just the moment we were here, we had no other option but to take shelter behind that wall nearby. That is how you can save your life in the conflict zone. That's how you can save your life in the war-torn area, because whenever the rockets are fired, all you can do is first you should lie on the ground. This is a thumb rule you should follow, or you should move towards the nearby bomb shelter. As there is no nearby bomb shelter, you can see how these troops are on high alert. They are moving towards that area from where they are firing rockets, because on one hand it is the Israeli Air Force. They are targeting, trying to dismantle those hideouts where the Hamas people are hiding. Besides this, they are also trying to provide cover fire to the ground troops, because at the end of the day the ground troops have to enter, because they too have got the bomb shelters. These terrorists are hiding behind the population, because they know once they are hiding behind the population, obviously when there will be punitive strike from Israeli side, some of the civilians will die. That will get easy for them to indoctrinate and brainwash more youngsters to join Hamas gun culture. And also this will help them to continue with the vicious cycle of violence. That's what on which they are striving for, on which they are thriving for the last so many years. But the biggest challenge for the Israeli troops is, one, they have to clear this area where they believe that maybe some of the Hamas terrorists can be there in some of the places. And second thing, what they are trying to do is, they're also trying, let me show you, let me show you some of the bullets here, lying here. This narrates the whole story. These bullets narrate the story, that there was a gunfight on that very day. That again, no. You can hear that. See the now sound of those firing from the other side. And see here, these are the bullets that were exchanged between the Israeli troops, because when they came out to this place, they had no other option but to clear that area. Immediately after that, they tried to, in fact, somehow pin down those terrorists, track down those Hamas terrorists, pin them down. That was the biggest challenge to them. And now the area is clear, and that's one of the reasons we had been able to reach here. This is the police station, the first police station that was attacked, and now with the help of the JC machine, they're trying to clear rubble. Nobody, if you look at the condition of the building, no one can say that this was ever the police station in one of the most secure zones. But after a long time, after 50 years, we have seen that such an attack has been carried out by the terrorists from the Gaza Strip. That's one of the reasons that regularly they are pounding shells in that area, trying to dismantle their infrastructure. And right now, also you can see the security personnel, they are on high alert. They are trying to ensure that they have to pin down these Hamas terrorists at earliest. And these were the bullets that were exchanged on that very day. And these bullets are lying. These bullets are littered around. That shows that on that very day, there
was a confrontation between the Israeli forces and Hamas terrorists who were hiding here. It was after exchange of bullets, and finally they were able to flush them out. They were able to clear this area, which was occupied temporarily by Hamas terrorists, because from this place towards the residential area, they started targeting innocent, unarmed civilians. And you can see all these vehicles with army personnel. This is Israeli defense personnel. They are moving toward the Gaza Strip. They are moving toward the Gaza border. And these are the vehicles in which the rubble that will be collected, that will be put. And right now, here the tension is in atmosphere, because there seems to be no respite in firing of missiles and the rockets by the Hamas terrorists from Gaza Strip. And here you can see that security has been beefed up. Counter-offensive punitive action has been initiated by the Israeli forces, Israeli defense personnel. There are 1,200 people so far has lost their lives, and 2,000 of them have been injured because of this Hamas terror attack. And that's why the war has been declared. And Israel defense minister as well as the Israeli prime minister, they have made it clear that they are going to dismantle their infrastructure. They are going to raise each hideout of Hamas to ground. That's what they are going to do. And here in Shirot, where from the Times now is reporting, this is the place that came in the line of fire. And these Hamas terrorists, they infiltrated into this area, and then they started targeting civilians. They started targeting whosoever came their way. They started opening fire on the vehicles passing by. And this is a place which is close to Gaza. Short while back, there were a few rockets that were fired. About 10 to 12 rockets were fired within the span of about 2 to 3 minutes. And we were very much on the spot. And that was the time when Time Network team had to take shelter behind the walls nearby, because there's no bomb shelter nearby. Otherwise, normally what happens that whenever there's a shelling or the siren sound is heard, the best option is that you should move towards the bomb shelter, rush towards that place. That's what we had seen the people had been doing ever since the Hamas attack has taken place. But as there was no bomb shelter, so the best option left was to just hide behind the wall. And I asked my video journalist Sachin Rawat also, who is along with me, to just lie on the ground. And that is the best way you can capture visuals also, because there's an unwritten commitment of Times Network to the viewers that news at any cost, whether it is the line of control of Indo-Pak border, whether it is Ukraine war front, or it is the frontiers of the Israel and Palestine. We will be reporting you and getting you the latest pictures, because this is not the duty, this is a promise to the viewers, where we are going to shed light amidst the dark shadows of war, where we are trying to bring you all the sides of the story. And that's what we have been doing. Let me again show you. This was the police station. We are at a place that came under Hamas attack on that day, and this was the police station that was attacked by Hamas terrorists, and many people lost their lives, though the figure had not been so far given by the government side, but a lot many people lost their lives. And after that they moved towards the nearby locality. They tried to move towards the nearby area. They tried to take people as hostage. 100 people are still in their captivity. They have threatened to kill them, execute them publicly if Israel will not stop bombing of Gaza. This is the kind of a blackmail from your side. They're trying to use those hostage as bargaining chip. That's what they had been doing. Besides this, they are trying to put pressure on the government. And these bullets that we have just recovered from this particular place narrate the whole story, what really went on Sunday morning, what really happened, and how finally Israeli troops were able to recapture this area that was temporarily occupied by Hamas terrorists. That's what really had happened at that point of time. Well, these are the live reports. Pradeep Dutta is getting us. Phenomenal job, Pradeep. You, as well as Sachin Rawat, your video journalists, have literally put your lives in danger to get us these ground reports. I do hope that both of you remain safe and do take shelter the minute you hear the sirens as they were blaring right behind you. But what really has shocked the entire world is not just the fact that there has been a war, but the brutality, the massacre that Hamas has unleashed. That is what has jolted the collective conscience of the entire world, regardless of which nationality. They have unleashed this brutality, and that's what's very disturbing to see in some of the videos that they themselves have released. What are you picking up from about the spirit of the people of Israel now that you are speaking to them, especially so close to the Gaza border where you are? बताऊंगा कि आज भी बड़े दुख की बात होती है जहां पूरा दुनिया इस समय इजराइल के समर्थन में खड़ा है, क्योंकि वो इजराइल के समर्थन में नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। उनको मालूम है कि आतंकवाद किसी भी
तरह से सही नहीं है। और भारत सबसे पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे इजराइल को समर्थन दिया था, सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस की थी, क्योंकि भारत से ज्यादा आतंकवाद के बारे में कौन समझ सकता है। क्योंकि पिछले कई दशक से हमने देखा कि पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवाद है उसकी वजह से भारत को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं एक बार फिर से अपने व्यूअर्स को दिखाता हूं, ये वो इलाका है जहां सबसे पहले शनिवार की सुबह आतंकवादी जो हमास के थे वो जो पैराग्लाइडर से लैंड करके आते हैं तो वो इस सिरोट के इलाके में आते हैं, बिकॉज गाजा के साथ बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। और उसके बाद यहाँ के पुलिस स्टेशन पर हमला करते हैं जिसमें कई पुलिस मारे जाते हैं। और आज देखिए पुलिस, इस पुलिस स्टेशन की हालत मलबे में तब्दील हो चुका है। अब ये मलबा कलेक्ट करने के लिए जेसीबी मशीन लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि इजराइल के सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से तैनात है और लगातार वहां पे उनके ठिकानों पे हमले किए जा रहे हैं। और बिल्कुल सही आपने मेघना कहा कि सबसे बड़ी चीज यह है कि इंसानी हकूक जिसकी बात कई लोग करते हैं, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उसका उल्लंघन हो रहा है, किस तरीके से युवाओं को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को भी बख्शा नहीं जा रहा। 1200 के करीब लोग मारे जा चुके हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा सिविलियन बताए जाते हैं। और उन सिविलियन को कसूर क्या है, हर कोई यही सवाल पूछता है। कल मैं एक बॉम्ब शेल्टर में गया, जब सायरन के बाद वहां पे रॉकेट फटने लगे तो वहां पे मैंने देखी 2 साल की बच्ची और एक 4 साल का बच्चा, तो उनकी मां सवाल पूछ रही थी, ये लोग तो इजराइल और फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट समझते भी नहीं है, तो इनको क्यों निशाना बनाया जा रहा है। लगातार हमने देखा कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए जिस पुलिस स्टेशन के बाद हमला करने के बाद जिस इलाके में हम गाजा पट्टी के करीब हैं, इसके बाद ये रिहायशी इलाकों में घुस गए थे और लोगों को निशाना बनाया था। ये हमास के आतंकवादियों ने किया। लेकिन आज भी आप देखेंगे कुछ ऐसे मुल्क जैसे टेररिस्तान पाकिस्तान, आज भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जो है उनकी हिमायत कर रहा है, उनके खिलाफ नहीं बोल रहा। और वैसे भी उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मुल्क सिर्फ टेररिस्ट को पनाह दे, जो आतंकवादियों को पनाह दे, तो उससे वैसे भी कोई उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर उसका आका जो चाइना है, आप वो भी देखिए, एक तरफ तो वो कंडेम कर रहा है अटैक को, लेकिन दूसरी तरफ कहता है कि सॉवरेन नेशन होना चाहिए फलस्तीन के लिए। लेकिन अगर आप फलस्तीन की बात करते हो, कहीं ना कहीं आप हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से आला अफसरान लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, मीटिंग का दौर चल रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये इलाका थोड़ी देर के लिए हमास से कब्जे में कर लिया था और उस इलाके को एक बार फिर से रिकैप्चर कर लिया था हमारे इजराइल के बहादुर जवानों ने। एक तरफ हम देखेंगे कि उनकी एयरफोर्स किस तरीके से उन ठिकाने पे लगातार बमबारी कर रही है जो कि अल फुरकान का एरिया है, क्योंकि इस वक्त एक आतंकवादी है जिसकी तुलना की जा रही है, उसे इजराइल का उसामा बिन लादेन कहा जाता है, मोहम्मद दाइफ, उसे कहा जाता है बगदादी ऑफ फलस्तीन, उसका वो है मोहम्मद दाइफ। क्योंकि खूंखार तरीके से, जिस तरीके से बच्चों को मारा गया, जिस तरीके से औरतों को मारा गया जो कि फेस्टिवल मूड में थे, पार्टी कर रहे थे, जिनको निहत्ते को गोलियां चलाई गई, जिस बेदर्दी से खूंखार तरीके से दरिंदगी से मारा गया, तो वो बगदादी ही कहा जाएगा। क्योंकि इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू जब बात कर रहे थे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन से, उन्होंने टेलीफोन में एक तो शुक्रिया कहा, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये आईसिस से भी ज्यादा खूंखार है, इनके साथ भी उसी तरीके से डील करना चाहिए, कोई भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमास की कोशिश है विक्टिम कार्ड खेलने की और कुछ लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे नेता आज भी सियासतदानों की तरह सोच रहे हैं, सियासत खेलने पर मजबूर है। कांग्रेस जिस तरीके से रेजोल्यूशन पास करती है, ठीक है आप फलस्तीन के लोगों के लिए बोलिए, लेकिन उन इजराइल के बच्चों के लिए, माओं के लिए भी बोलिए, उनकी हिमायत ना करिए जो आतंकवादी है। क्योंकि जैसे आप सवाल पूछते आए, चाहे पुलवामा बॉम्बिंग के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई या उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मेहरबानी करके अब तो ये आप जो सियासत का नंगा नाच है बंद कर दीजिए। अब वक्त आ गया है कि आप उन बच्चों के लिए, औरतों के लिए सवाल पूछिए। और आप देख सकते हैं कि किस से यहाँ पे हमें थोड़ा दूर हटने के लिए कहा जा रहा है। और लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे कहीं भी कुछ हो सकता है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पे पहुंचे, पूरे 3 मिनट के अंदर 10 से 12 के करीब रॉकेट दागे गए। मुझे और सचिन रावत को दीवार के पीछे छुपना पड़ा। नॉर्मली क्या होता है कि सायरन बजने के बाद अगर रॉकेट फटते हैं तो आप बॉम्ब शेल्टर में चले जाते हैं, लेकिन अगर आप ओपन में रिपोर्ट कर रहे हैं तो बॉम्ब शेल्टर नहीं होता, तो आप जमीन पे लेट जाते हैं। वही कुछ हमने किया। लेकिन हमारी एक कमिटमेंट है, टाइम्स नेटवर्क की कमिटमेंट अपने व्यूअर्स के साथ, हमारे देशवासियों के साथ, पल पल की आपको खबर देंगे, इन धमाकों की गूंज के बीच में आपको खबर देंगे, चाहे कुछ भी हो, हर पल की खबर आपको देंगे। क्योंकि ये हमारे लिए जॉब नहीं है, ये हमारे लिए कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट पे पूरे हम कायम रहेंगे। और यही एक वजह है कि चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो हिंदुस्तान पाकिस्तान का, या चाहे यूक्रेन रशिया वॉर हो, या चाहे ये फलस्तीन के साथ जंग हो इजराइल की हमास के साथ, उस वक्त भी हम आपको पूरी पल पल की खबर दे रहे हैं। क्योंकि हम अपनी
करते हुए चाहते हैं कि आपको खबर मिलती रहे, सच्चाई के दोनों पक्ष आपके सामने आए। जो सच्चाई के पक्ष इस वक्त इस पुलिस स्टेशन की तरह मलबे के अंदर दबे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि यह सच्चाई भी कहीं इस जंग के मलबे के नीचे दब जाए। हम चाहते हैं सच्चाई से रूबरू आपको करा पाए। और देख सकते हैं आप किस तरीके से इनके लिए सामान, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट आ रही है, जो यहाँ पे सिक्योरिटी कर्मी है, जो इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के, इनको ताकि यहाँ पे मिल जाए। और लगातार अब देखिए यहाँ से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं ताकि ये लैंड फोर्सेस को भी एयरफोर्स जो है मदद कर रही है। लगातार आप देखिए बमबारी उस इलाके में हो रही है। 200 से ज्यादा स्ट्राइक किए गए हैं। मोहम्मद दाइफ के कहा जाता है कि उसके रिश्तेदारों के ठिकाने पर भी बमबारमेंट की गई, कुछ मारे गए हैं। कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी इस खूंखार आतंकवादी मोहम्मद दाइफ को मार दिया जाए, जो कि ओसामा बिन लादेन या बगदादी कहा जाता है, फलस्तीन कैसों का सबसे मोस्ट वांटेड पर्सन है, क्योंकि इसने वो कारनामा किया जो किसी को करना नहीं चाहिए, जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। बच्चों को मारा, निहत्ते बच्चों को मार दिया, औरतों को मार दिया। और अभी भी 100 से ज्यादा लोग उनके बंदी बने हुए। कहा जा रहा है कि ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स देखिए किस तरीके से अपनाए जा रहे हैं। वो कह रहा है कि अगर आपने गाजा पर बमबारमेंट रोकी नहीं तो हम कभी भी इनको पब्लिकली मारना शुरू कर देंगे, जो बच्चे हमने पकड़े हुए हैं। और हमने देखा कि खाली फलस्तीन ने के जो इन आतंकवादी हैं, इन्होंने खाली इजराइल के लोगों को बंदी नहीं बनाया, जिसमें कई अमेरिका के हैं, यूके के हैं, फ्रांस के हैं, कई नेशनलिटीज के लोग हैं, उनको बंदी बनाया हुआ है। और इस वक्त देखिए ये वो इलाका है, यहाँ से ये वो इलाका मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। टाइम्स नेटवर्क की टीम उस जगह पे पहुंच चुकी है जहां पे हमास के आतंकवादी पहले दिन आते हैं और कैसे वो पैराग्लाइडर्स के द्वारा यहाँ पे लैंड करते हैं और उसके बाद वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। आप देखिए पुलिस स्टेशन किस तरीके से पुलिस स्टेशन को तहस नहस कर दिया और कई यहाँ पे पुलिसकर्मी मारे गए। उसके बाद वो यहाँ से रिहायशी इलाकों की तरफ जाते हैं। रिहायशी इलाकों में जाके चुन चुन कर उन निहत्ते बच्चों को और औरतों को निशाना बनाते हैं, उनको मारते हैं। और आज आप देखेंगे इस मलबे को उठाने के लिए जेसीबी मशीन लगी है, लेकिन जो इलाका उनके कब्जे में कुछ देर के लिए आ गया था, इस इलाके पे एक बार फिर से इजराइल की फोर्सेस का नियंत्रण है। इजराइल की फोर्सेस यहाँ पे पूरी तरह से नियंत्रण बनाए हुए हैं। और आप लगातार देख सकते हैं किस तरीके से हम आपको पल पल की खबर उन धमाकों के बीच में दे रहे हैं। हम आपको पल पल की खबर उन जगह से दे रहे हैं जहां पे सिर्फ आपको मौत का मंजर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक हमारी कमिटमेंट है अपने देशवासियों और व्यूवर्स के साथ कि कुछ भी हो जाए हम आपको वहां से खबरें पहुंचाते रहेंगे। और यही एक वजह है कि सचिन रावत और मैंने कल भी जब हम एश्केलोन के इलाके में गए थे तब भी उसी टाइम रॉकेट दागे जा रहे थे और हमें भागना पड़ा था, आड़ लेनी पड़ी थी, लेकिन हमारा कैमरा भी ऑन रहा, हमारा माइक भी चलता रहा ताकि हम हर तस्वीर अपने कैमरे में कैच करते पाए। हमने उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि जब आप अपने प्रोफेशन को एक प्रॉमिस की तरह लेते हैं, कमिटमेंट की तरह लेते हैं, तो आप वाकई वह ऐसे रिपोर्टिंग करते हैं। और यही एक वजह आज हम यहाँ पे करते आ रहे हैं और यही हमने अपने सीनियर से सीखा और यही हम आगे अपने जूनियर्स को भी कहते हैं कि इसी तरीके से आप अपना कर्तव्य करते रहिए। और हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है हमारी सियासती जमातें आज भी कुछ कर्तव्य नहीं। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पास कुछ, मैंने वो ये गोलियां देखिए, आप कुछ ये पता चलता है कि किस तरीके से उस दिन यहाँ पे जब दोनों के बीच में गोलाबारी हुआ, इजराइल की फोर्सेस आई और किस तरीके से यहाँ गोलियां चलती रही। अभी भी देखिए कुछ गोलियां यहाँ पे पड़ी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी भी कुछ गोलियां यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये देखिए कुछ गोलियां अभी भी यहाँ पे ये पड़ी हुई हैं। लगातार आपको हम दिखाते जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये चले हुए, ये देखिए यहाँ पे गोलियां आपको पड़ी हुई नजर आएंगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना हालात यहाँ पे कितने नाजुक थे, कितने मुश्किल घड़ी थी उस समय, क्योंकि किसी ने भी सोचा नहीं था कि वो त्योहार का दिन, जिस वक्त वो त्योहार मना रहे हैं, इस तरीके की कोई हरकत करेगा। पहले आप 5000 के करीब रॉकेट दागेगा, उस रॉकेट एक्सप्लोजन की आड़ में फिर इन्फिल्ट्रेट करता हुआ मोटराइज पैराग्लाइडर के थ्रू यहाँ पे लैंड करता हुआ आएगा और उसके बाद यहाँ पे रिहायशी इलाकों में जाके लोगों को निशाना बनाएगा। देखिए पुलिस स्टेशन में चले जाएंगे, जो कोई इनके सामने आ रहा था वहां पे फायरिंग करेंगे। बहादुर इन जवानों को सैल्यूट करना चाहिए जो हमेशा जान जोखिम में डालते हैं। उसके अलावा जो इजराइल के लोगों का स्पिरिट है, उसका जो जज्बा है, उसके जुनून है, उसको सैल्यूट करने की जरूरत है। हमने देखा कि कई लोग इस समय शाना पर शाना अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हो गए। They are all with their troops because one feels like saluting spirit of the people of Israel, because they are with their soldiers, they are there guarding the frontier so that they can take on the enemy and once again send a message loud and clear that any kind of terrorism will not be tolerated, and that is where the world community has to be united, because this is terrorism and they are no less than terrorists who had not even spared the women and children, because that's one of the reason. हमने देखा कि किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू in a telephonic conversation with
Joe Biden, American president, he has said that they are no less than ISIS terrorists and they should be treated like that because they are equally dangerous people. They have not spared women. They have even cut their heads. They have burnt them alive. They have mowed them down. They have targeted them. They haven't spared anyone. So that is the situation on ground. And right now you can see, आपको मैं दिखाता हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे इस समय टाइम्स नेटवर्क की टीम उस जगह पे पहुंच चुकी है जहाँ पहले हमला करने के बाद ये यहाँ पे पहुंचे थे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने किया था। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी दैट हाउ द फायर फाइट स्टार्टेड। एंड राइट नाउ आई एम होल्डिंग दोज cartridges with me, and these cartridges are the empty cartridges that were fired from both the sides. And finally they were able to recapture this area that was temporarily occupied by Hamas terrorists. And now the firefight is continuing. Today we saw that several sorties were conducted by the Israeli Air Force. They targeted many of those hideouts in Al-Furqan area. Al-Furqan is the area where from they are planning, executing, carrying out attack, firing rockets in this region. And most of the rockets that are being fired by the people are in civilian areas. There is hardly any security installation nearby. That clearly shows their intention because they want to inflict maximum casualty. But one feels like saluting the spirit of people of Israel and also these Israeli soldiers, that how within no time they were able to react, and there was a knee-jerk response from their side because they were taken by surprise, and it was a shocking too also. They didn't realize that all of a sudden these terrorists will be coming out to this place with the help of the paragliders, and they tried to repeat what really happened 50 years back, but this time it's more dangerous because 1,200 people have lost their lives. If we look at the situation on the ground from 2008 till date, before this attack, only 308 people had lost their lives in Israel. But in one attack, more than 1,200 people have died and more than 2,000 are said to be injured. Look at the intensity of the attack. But still there are some people who are playing politics, and there's a country like Pakistan. जब पाकिस्तान जैसे मुल्क हो टेररिस्तान, तो वो तो आतंकवाद का समर्थन करेगा, और आज भी पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ खड़ा है। एक मौका था पाकिस्तान का कि आज बता देता कि मैं आतंकवादियों के साथ खड़ा नहीं हूं, मैं इंसान के साथ खड़ा हूं, लेकिन आज भी पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से आतंकवाद खड़ा हुआ नजर आ रहा है। They are with those terrorists, and I think this is high time when we need to be united against this terror attack. And see, short while back, यहाँ पे रॉकेट दागे गए थे. In 3 minutes, more than 12 rockets were fired from the other side, and the tension in this area continues. And all I can say that we need to salute the spirit of people of Israel who are standing with their troops. They're already there on the frontiers. They want to fight against those terrorists who were responsible for death and destruction, because this is the story of death, destruction, terror and tyranny that was started by them. And that's one of the reasons that Israeli forces have made up their mind that they are going to decimate and demolish all their infrastructure. They will not allow these Hamas terrorists to raise their head. This is the commitment of Israeli troops to their people. And more important is that the people are also with them at this critical juncture. And Prime Minister Narendra Modi has also expressed solidarity with the people of Israel, because it will not be wrong if I say I for India and I for Israel. That is the kind of a sentiment which we are getting. I stand India, I stand for Israel. And you can see all these alert men, how they are there on the duty, and they are going. Wish you best of luck for your this going towards that Gaza Strip. I wish you best of luck. So this is it's a very dangerous battle which they are fighting, and look at their spirit, and their spirit is very high, the morale is very high. They are moving towards the spot where these Hamas terrorists are said to be hiding. You want to say anything to the people here? Actually, they don't speak. Their actions speak louder than words. That's actually what the soldiers really believe on ground. And here, what we try to ask them question, every time we try to ask them question, they said our actions speak. And that's what actually the people are also saying. We don't want to give any message. It will be basically our soldiers, our people on the ground, they are going to send a message loud and clear with their action, because they do not want to give war cries or slogans, but they want to do it on the ground, exactly what they are doing. Look at the situation here on the ground. Let me again show you. This was the police station, the first place that was targeted by Hamas terrorists. It was on Saturday morning at about 6:30. सुबह 6:30 का वक्त था जब all of a sudden हमने देखा कि किस तरीके से पहले 5,000 के करीब रॉकेट चलाए जाते हैं एक अनप्रोवोक्ड एग्रेशन उनकी तरफ से, और उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद से ऑपरेशन लगातार निहत्तों को मारा जा रहा है, और अब रिटेलिएशन का वक्त है और जो इजराइल करता जा रहा है इस इलाके में। और ये सेरोट का इलाका बिल्कुल गाजा स्ट्रिप के पास है, और हम इस समय कुछ ही दूरी पर हैं गाजा से, और आपको लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं।
मंजर पूरा बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे और किस तरीके से इजराइल ने इस इलाके को फिर से रिकैप्चर किया जहां पे एक बार हमास के वो टेररिस्ट आतंकवादी आके घुस गए थे। Well, it's phenomenal work that you, as well as Sachin Rawat, your video journalist, Pradeep, have been doing. You were trying to speak and you have been in touch with all the security forces of Israel as well, the IDF forces who are there very close to the Gaza border. Now, give us a sense of the geography of the where you are, and we'll come back. And after the break, you must also explain to us the retaliatory strikes by Israel, which it has launched over the past 2 days over the Gaza enclave, which is occupied by the Hamas sympathizers. We'll come back and more live updates. Phenomenal job that Pradeep Dutta and Sachin Rawat have been doing very close to the Gaza border. Stay tuned for more.